Prophet Ibrahim alayhi salam. Part 1. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din. Prophet Ibrahim alayhi salam was born in Iraq. Ibrahim alayhi salam Iraq में पैदा हुए. His father lived by carpentry and by making and selling idols for worship. उनके वालिद idols बनाते थे और उन्हें बेचते थे worship के लिए, इबादत के लिए. As Ibrahim alayhi salam grew, जैसे जैसे वो बड़े हुए, he saw his father make images out of wood and stones. उन्होंने देखा कि उनके फादर जो हैं, उनके वालिद स्टोन से और वुड से अलग अलग तरह की इमेजेस बना रहे हैं. One day he asked his father, एक दिन उन्होंने अपने वालिद से पूछा, how he worshipped gods which he himself had shaped. वो कैसे इबादत कर सकते हैं ऐसे खुदाओं की जिनको उन्होंने खुद बनाया हो. His father replied that he had found his forefathers doing the same. उनके वालिद ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा ही अपने forefathers को करते हुए देखा है. Means that's why he is also doing the same thing. He is also worshipping the idols because the father has seen their forefathers doing the same. Ibrahim was not satisfied with the answer. The young boy Ibrahim alayhi salam, he was not satisfied with the father's answer. उनको उनके वालिद का आंसर अच्छा नहीं लगा, वो satisfy नहीं हुए सुनकर. He openly began asking people, और वो सब लोगों से पूछने लगे, what are those images to which you are so deeply devoted? यानी वो सबको देखते थे कि सब जो इमेजेस हैं जिनको वो खुद स्टोन से या वुड से बनाते हैं उनकी वो इबादत करते हैं. तो वो जानना चाहते थे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं. He wanted to know that the images which they are making by themselves of wood and stone, why they are so deeply devoted to them. People replied the same as his father had done. People also said the same thing. They replied the same thing, that we have seen our forefathers doing this, that's why we are also doing this. लोगों ने भी उनको वही जवाब दिया जो उनके वालिद ने दिया था कि हमने अपने forefathers को ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए हम भी ऐसा ही करते हैं. Ibrahim alayhi salam explained to them. Ibrahim alayhi salam ने सबको समझाया, your sustainer is the sustainer of heavens and the earth. आपको जो sustain किए हुए है वो है जो heavens और earth यानी आसमानों और ज़मीन का जो sustainer है वही आपका sustainer है. उसी ने आपको भी sustain किया हुआ है. It is he who has given you life. He was explaining to people, he explained people that it is Allah who has given you life. Allah ने तुम्हें ज़िंदगी दी है. He alone deserves to be worshipped. जिसने ज़िंदगी दी है, जिसने सब चीज़ों को सस्टेन किया हुआ है, वही डिज़र्व करता है कि हम उसकी इबादत करें. Because he is sustaining everything. He has created us. He has given us life. He is sustaining the earth and the heavens. So he deserves to be worshipped. And you worship things which can neither benefit you nor harm you in any way. The Prophet Ibrahim alayhi salam told them that whatever you are worshipping, these idols made up of wood and stone, they can
neither benefit you nor harm you in any way. उन्होंने लोगों को समझाया कि तुम जिनकी इबादत कर रहे हो ना ये तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं. Prophet Ibrahim alayhi salam was a man of truth. He worshipped only one God. वो सच्चे थे, वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे. The creator of the stars, और God कौन है? जो creator है stars का, moon का and the sun. He worshipped only one God, the creator of the stars, the moon and the sun and all things we see and cannot see. Who is God? He is the creator of star. God वो है जिसने stars को बनाया है, जिसने moon को बनाया है, जिसने sun को बनाया है और उन सब चीज़ों को बनाया है जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम नहीं देख सकते. He has created everything. Prophet Ibrahim did not worship idols. Prophet Ibrahim alayhi salam कभी भी idols की worship नहीं करते थे. He knew that it was silly to do that. उनको लगता था कि ये silly है इस तरह से worship करना कि खुद carve कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं wood और stone से और फिर उन्हीं की worship कर रहे हैं. He therefore decided to prove that the idols the people worshipped were powerless and could be of no use to them. वो चाहते थे कि प्रूफ करें सबके सामने कि जो लोग जिनकी वर्शिप कर रहे हैं वो पावरलेस हैं, उनके अंदर कोई पावर नहीं और उनका कोई यूज़ नहीं. By God, I have a plan for your idols, said Ibrahim to them. On one occasion, the people had gone out feasting and enjoying themselves at a fair. एक occasion आया जिस पे लोग बाहर गए हुए थे, जहाँ वो फेयर में गए हुए थे, मेले में गए हुए थे, जहाँ वो अपनी खाना पीना enjoy कर रहे थे. It was cool moonlit night और बहुत ठंडी रात थी वो. Ibrahim thought it was a good chance. इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये अच्छा चांस है. He went straight away to the chief temple carrying an axe. इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो chief temple था उनका वहाँ पहुँचे axe के साथ. The temple was big and no one was there. बहुत बड़ा temple था और वहाँ कोई नहीं था. Around him stood many idols and in the center of the temple stood the idol of the chief god. Temple के center में chief god का idol था और उसके आसपास बहुत सारे idols थे. It stood there speechless and unaware of the presence of Prophet Ibrahim alayhi salam. The chief idol, it stood there speechless and unaware of the presence of Prophet Ibrahim alayhi salam. जो idols थे वो unaware थे कि उनके पास इब्राहीम alayhi salam खड़े हैं क्योंकि वो idols थे ना. Prophet Ibrahim alayhi salam lifted his axe and began to hit one idol after the other. इब्राहीम alayhi salam ने axe उठाया, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारे idols को मारना शुरू किया. Soon the temple floor was littered with the heads, legs, ears and noses of the images. थोड़ी ही देर में फ्लोर पर जितने भी आइडल्स थे उनके हाथ टूटे हुए पड़े थे, उनके पैर, उनके ईयर्स, उनके नोजेस नीचे पड़े थे. Prophet Ibrahim alayhi salam smashed all the idols except one of the chief god. सिर्फ जो chief god था उसको छोड़कर
उन्होंने जितने भी दूसरे आइडल्स थे सबको स्मैश कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सबको तोड़ दिया. He left the biggest idol untouched. उन्होंने biggest जो सबसे बड़ा idol था उसको नहीं छुआ. As if he wanted to tell the people that a battle had been fought among the idols. He wanted to tell the people, to show the people that a battle had been fought among the idols. वो सबको दिखाना चाहते थे, सबको बताना चाहते थे कि एक जंग हुई है टेम्पल के अंदर बड़े आइडल्स और छोटे आइडल्स के बीच. द बिगेस्ट वन हैड वन द बैटल. वो बताना चाहते थे कि जो बिगेस्ट आइडल है उसने इस बैटल को जीत लिया है. स्मैशिंग ऑल द स्मॉलर वंस. और ये जो बिगेस्ट आइडल है इसने सबको सबको तोड़ दिया है. When people saw the next day what had happened to their gods, they asked, "Who has done this to our gods?" People were very angry when they saw all these things, all the gods smashed and all the gods on the floor. They were very angry. जब लोगों ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए. उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा कि ये किसने किया है हमारे गॉड्स के साथ, ये हमारे गॉड्स को क्या हुआ है. The news ran through the city. पूरे सिटी में ये खबर फैल गई. There began a mighty search for the person who had done this. सब ढूंढने लगे कि किसने ये काम किया है. Some people said that they had heard the other day a young man called Ibrahim speak of these gods. कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक यंग मैन इब्राहिम को उनके गॉड्स के बारे में बात करते हुए सुना. On being searched out, they asked, "Have you done this to our gods, O Ibrahim?" उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सब तरफ ढूंढा और फिर उनसे पूछा, क्या तुमने ये काम किया है हमारे गॉड्स के साथ? No, it was this, the biggest of them all, who did it. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, ये जो सबसे बड़ा आइडल है इसने सबके साथ ऐसा किया है. Why don't you ask these idols? आप इन आइडल से पूछ लीजिए. They will tell you everything that has happened, replied Ibrahim अलैहिस्सलाम. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इनसे पूछ लीजिए, ये आपको सब कुछ बता देंगे जो जिनके टुकड़े टुकड़े नीचे पड़े हुए थे. Ibrahim, you already know that these idols do not speak, the people argued. लोगों ने कहा कि तुम जानते हो कि ये बात नहीं कर सकते. It was now Ibrahim's अलैहिस्सलाम's turn, for which he had been waiting. अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टर्न था जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे. Do you then worship instead of Allah things that cannot benefit you in any way? Ibrahim अलैहिस्सलाम said. Do you then worship? क्या तुम वर्शिप करते हो, इबादत करते हो अल्लाह को छोड़ के ऐसी चीज़ों की जो तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं दे सकते? Shame on you and fie upon all that you worship. Shame on you, उनको shame दिलाया कि तुम shame on you कि तुम इन लोगों की इबादत करते हो. Will you still not use your brains? क्या तुम अपने brains use नहीं करोगे? Prophet Ibrahim had an argument with the king also. When all these happened, the king called Ibrahim and he had argument with the king also. Prophet Ibrahim had an argument with the king also. He was very proud to be king. He believed that he was a God king. The king, he was very proud king, or he believed that he was a God king. Prophet Ibrahim अलैहिस्सलाम को वहाँ का जो किंग था उसने बुलाया
और प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हुआ। वो बहुत प्राउड किंग था, वो अपने आप को गॉड किंग समझता था। Ibrahim said to him, My sustainer is he who gives life and causes death. इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, My sustainer, my God is he who gives life and causes death. वो है जो ज़िंदगी देता है और जो डेथ देता है, जो मौत देता है। The king argued proudly, I also have power of life and death. But Ibrahim said, किंग ने जवाब दिया, मैं भी ज़िंदगी दे सकता हूँ और मैं भी मौत दे सकता हूँ। But Ibrahim said, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, Ibrahim अलैहिस्सलाम said, My sustainer is he who causes the sun to rise in the east. Can you cause it to rise in the west? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो ईस्ट से सन को राइज करता है, क्या तुम वेस्ट से कर सकते हो? This silenced the king. अब किंग जो था वो चुप हो गया, वो कुछ न बोल पाया। But the stubborn king decided to punish Prophet Ibrahim alayhis salam while Allah was watching and listening to all. वो जो किंग था उसने डिसाइड किया कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पनिश करेगा, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ वॉच कर रहे थे और सुन रहे थे। The king had a big fire made. He ordered Ibrahim अलैहिस्सलाम to be thrown into the leaping flames. उसने एक बहुत बड़ी आग जलवाई और ऑर्डर किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकने के लिए। The flames might have consumed Ibrahim अलैहिस्सलाम, but Allah ordered the fire to cool down for his prophet, and Ibrahim अलैहिस्सलाम was wonderfully saved. वो फ्लेम्स जो थी फायर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला देती, लेकिन अल्लाह ताला ने ऑर्डर किया फायर को कि वो ठंडी हो जाए उनके प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, और प्रॉफिट अलैहिस्सलाम बहुत ही वंडरफुली सेव हो गए, बच गए, इतनी आग से भी वो निकलकर बाहर आ गए। It was not a suitable place for Ibrahim अलैहिस्सलाम to live anymore. अब वो प्लेस सूटेबल नहीं थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रहने के लिए। अल्लाह देयरफॉर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू अ डिस्टेंट प्लेस। अल्लाह ने उन्हें ऑर्डर किया कि वो कहीं दूर चले जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लव्ड एंड ओबेड अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह से मोहब्बत करते थे और अल्लाह को ओबे करते थे। He always said yes to whatever Allah commanded. अल्लाह ताला उन्हें जो हुक्म देते थे वो हमेशा उसको मानते थे। Soon Allah gifted him with 2 sons. और बहुत ही जल्दी अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बेटों से नवाजा। They were Ishaq and Ismail. These sons had children and grandchildren. इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के और बेटे हुए और फिर उनके भी बेटे हुए। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also belong to the family of इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली में से हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में से हैं, उनकी जनरेशन में से हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की। I am the result of Prophet Ibrahim alayhi salam's prayer, said Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to say that I am the result of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Ibrahim alayhi salam's prayer. हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मैं इब्राहीम अलैहि सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि एक ऐसा प्रॉफिट भेजना जो हमें हमारा दीन सिखाए, तो फिर आप
अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा. Now let us do the activity. Answer these questions. Where was Prophet Ibrahim alayhi salam born? How did his father make a living? Prophet Ibrahim alayhi salam was born in Iraq. His father lived by carpentry, by making and selling idols for worship. What did Ibrahim alayhi salam ask his father one day? Ibrahim alayhi salam asked his father how he worshipped God, which he himself had shaped. What did Ibrahim alayhi salam ask people? Ibrahim alayhi salam asked, what are those images to which you are so deeply devoted? How many gods did Prophet Ibrahim alayhi salam worship? He worshipped only one God. How many gods did the people around him worship? People worshipped many gods. What kind of a king ruled in the days when Prophet Ibrahim alayhi salam lived in Iraq? He was a proud king and idol worshipper. What did he think of himself? He believed that he was a God king. Why did he decide to punish Prophet Ibrahim alayhi salam? He decided to punish Prophet Ibrahim alayhi salam because he lost the argument. Ibrahim alayhi salam was thrown into the fire. How was he saved? Allah subhanahu wa ta'ala ordered the fire to cool down for his prophet. Why did Prophet Ibrahim alayhi salam leave Iraq at last? It was not a suitable place for Ibrahim alayhi salam to live. Allah therefore ordered him to go to a distant place. Now match the following. Allah chose Ibrahim alayhi salam to be his prophet. Allah raised many prophets from among the children of Ibrahim alayhi salam. Allah has the power to will anything. If Allah wants to save someone, no one can bring harm to him. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam belongs to Ibrahim alayhi salam's family. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.